हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के। आप आज के वीडियो हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 12 पाठ 5, जिसका नाम है पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ। इसका प्रथम दिवस अपन देखते हैं। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ है। पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 पर दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा कि चित्र में आप देखिए, चित्र में तेंदुआ कहाँ पर बैठा है? आप लिखो पेड़ पर बैठा है। क्या जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पशु पक्षी दिखाई देते हैं? तो आप लिखो हाँ। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं? इस तरीके से आप अपने चित्र को देख के इसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। और जो भी आपके समझ में ना आए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और सारे प्रश्नों के हल मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। आप अच्छे से वीडियो को रोक के आराम से अपनी पुस्तक को भर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर